Dear students, I want to explain today mathematical tools. Basic mathematics which is required to understand kinematics like addition, subtraction, multiplication, division. Addition, subtraction, multiplication, division. D by dx, d by dy, d by dz, d by dk, d by dt. These are called differential operators. This is called differential operator. D by dx is a differential operator. D by dy is a differential operator. D by dz is a differential operator. D by dk is a differential operator. These are differential operator. Or it is called differential coefficients. Or it is sometimes called rate. But the rate is not actual word. That means with respect to time. You just say this is differential operator. Okay. So how this differential operator operate between two functions and gives us result? How this differential operator operate on a functions and gives us result? See, d by dx, when this operator operate on function x to the power n, this will give you nx n minus 1. Look at this. This is simple operator like additions 3 and 5. This is two number or not. If you will use a addition symbol, then that will give you 8. If you will use subtraction symbol, that will give you minus 2. Similarly, d by dx, one differential operator, and this will operate on x to the power n. This will give you n x n minus 1. Here n belongs to z. Okay. Now, for example, suppose in place of x to the power n, suppose you will put x square. Then this will give you 2x2 minus 1, 2x. Suppose this is in place of d by dx of suppose x to the power minus 3. The minus 3 minus 3 minus 1 like this, n x n minus 1. There is a formula. Okay. So similarly, suppose this is read as dy by dx. Here the y is a function. Differentiation of y with respect to x. Look at this. D by dx is a operator and this is a function. If operator and function both are there, in which way we will read? Dy by dx means differentiation of y with respect to x. Suppose this is a dx by dt. What you will read? Differentiation of x with respect to t. Suppose there is a dk by dz. Differentiation of k with respect to z. In this way we will read this one. But there is a question you may ask, sir, what is differentiation? What is the use of differentiation? Why will study differentiation before kinematics? What is the need to understand this differentiation before to study kinematics or any mechanics? This is required. I want to say just later on. So first of all you understood. First of all you have to concentrate that what the differential operator do, in which way this differential operator do the operations. सेटा शिख केमिति ऑपरेटरटा ऑपरेट करूची सेटा प्रथम शिख. Like x to the power n, suppose let y is equal to a constant times x to the power n. Constant, c is a number. So then dy by dx, the constant is taken outside. Always constant will not operated by this operator. This is the rule. X to the power n, this will give you c n x n minus 1. Suppose example y is equal to 2x square. Sorry, just take 3x square because 2 both are there now. So dy by dx, this is d by dx of 3x square. 3 is not operated by this operator.
3 is taking outside. This is d by dx of x square. This will give you 3 into 2x2 minus 1, 6x. Okay, suppose in place of that now function is, now this y is sum of the multiple function x to the power m, x to the power n, x to the power p plus or minus. Then dy by dx is just, then here you will do differently differentiations. Means every individual functions will differentiated by differential operators. The d by dx of same operator, d by dx, x to the power m plus or minus x to the power n plus or minus d by dx of x to the power p. This will give you mx m minus 1 plus or minus n. Plus or minus, either this multiple functions are in the plus addition form or subtraction format, or both addition and subtraction format. Nx n minus 1 plus or minus px p minus 1, like this. Okay, suppose for examples y is given, suppose x is q plus x square plus x, then you will put dy by dx, dy by dx of x cube plus dy by dx of x square plus dy by dx of x. This will give you 3x3 minus 1, 2x2 minus 1 plus 1, because x to the power 1 is there, 1x1 minus 1, this is 1. You will get 3x square plus 2x. Why it is 1 you understood? This is power is 1, so 1x 1 minus 1. This will give you 1x to the power 0. Then x 1 into 1 1. Therefore dx by dx is 1, dt by dt 1, dx by dx 1. X to the power 1 is there, na? 1x 1 minus 1. 1 into x to the power 0, how much? 1. This is by dt 1, dz by dz 1, like this. Suppose y is only number, 5, 10, c, only constants. Only constant means, that means there is a x to the power 0 is there, 1 is there, including with constants. Any number means, think of a variable is there, 0 power, variable with 0 power. dy by dx means d by dx of c x to the power 0, c is taking outside, then d by dx of x to the power 0, then c into 0 x to the power 0 minus 1, answer is 0. That means constant differentiation of constant is equal to 0, like this. Like that, some trigonometric functions also have differentiation. So you just ask the question, sir, what is differentiation? Okay, first of all, you understood differential operator. What is the use of differential operator? Okay, take y is equal to a sin x. Then dy by dx is how much? This is a formula. D by dx of sin x is equal to cos x. This is a formula, means when the differential operator on sine functions, this will give you cos functions. Y is equal to cos x. So d by dx of cos x gives you minus sin x, like this. Similarly, sec x, y is equal to sec x, dy by dx, you will get sec x tan x, like this. There is a formula. In case of addition, subtraction to over, suppose multiplication, say y is equal to u into v. U is a function of x, v is also a function of x. Then there dy by dx formula is d by dx of u into v. U is one function of x, v is also function of x, both multiple function in the product form. Then this is u. Okay, then you can do u into dv by dx plus v into dv by dx. Just keep one, differentiate another, and keep another, differentiate of the same one. Means first function, differentiation of second, plus second function, differentiation of first. Like this you will do one product. Suppose in place of like this. So in case of division, when y is equal to u by v format, then dy by dx is equal to d by dx of u by v format.
this will give, this is means division. U also function of x, b also function of x. Means differential operator, how it is operated on in case of divisions, in case of quotient. The first numerator denominator v du by dx, এটা সিকুয়েন্স চেঞ্জ করবনি, হইরাণ হয়ে যাব, নলে প্রডক্টর সিকুয়েন্স চেঞ্জ করদেব, এটি চেঞ্জ করবনি। v du by dx minus udv by dx divided by v square means denominator derivative of numerator, differentiation of numerator, minus numerator differentiation of denominator by denominator square. In this way you will get y is equal to u by v. Okay, so in addition, subtraction, and you can verify you can verify by take y is equal to, suppose, tan x, y is equal to tan x, so sin x by cos x, dy by dx, so put d by dx of sin x by cos x, take u v is equal to cos x, u is equal to sin x, then by formula you will get sec square x. By division formula you will get d tan x divided by dx, you will get sec square x, like this. Then the question is, what is the use of differentiation? See, last 2-3 times I had asked what is the use of differentiation. I want to explain what you mean by differentiation. First, say y is a function of x. Let the y and x relation is like this. Suppose so y-x relation is like this. Means that means say the y changes by x, by changing x like this way. Means for there is a one value of x, there is another value of y. For another one value of x, there is another value of y. Means every point there is a x coordinate also varies and y coordinate also varies. That one. ମୁଁ କହିବା କଥା, ମନେ କର ୱାଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି, ୱାଇ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ୱାଇ ଏକ୍ସର ରିଲେସନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିଟା କର୍ଭ ଆସିଲା, ଲେଟ୍ ଏମିତି କେତେ ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ସେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ one value of x there is every one value of y. Just take 2 points, one point you take a, another point b. Say its coordinate is x comma y, its coordinate is b, x plus delta x comma y plus delta y. That means once you will shift from a to b, see, look at this is the x-axis. Suppose till this the distance is x in x-axis, and this one little bit more than x, means if x changes till this is y, okay, and this is y plus delta y. Means that means if x changes to x plus delta x, if x, or you can say increases, if x increases to x plus delta x, obviously y also increases to y plus delta y, because y is function of x. For every one value of x there is a one value of y. Look at this, this is an AB and these 2 points are on one curve, but the a is little bit very बहुत तले अच्छी, b टा टिके कर्व रो ऊपर अच्छी. So what is the slope of this line? Just to imagine this AB line, you connected AB. Slope of AB is how much? Slope of AB generally you know tan theta. Okay, so this is theta, tan theta, and this one you know delta y, because this y plus delta y minus y, this is y na, this is what is delta y, this is delta y, this much is delta y, okay, and this much is delta x. So then tan theta is equal to delta y by delta x. See, the slope of this AP is delta y by delta x. Means a और b भितर बहुत चेंजेस अच्छी, कहीं a रो x बेले x कोऑर्डिनेट बेले b रो y कोऑर्डिनेट, a रो y कोऑर्डिनेट y, बट b रो x से थोड़ा चेंजेस है, y भी चेंजेस है. Just imagine that line रो स्लोप, ab line रो स्लोप, जदि हम b टा को बहुत पाखक को आनिबा, ए पाखक को आनिबा, माने डेल्टा एक्स इज टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स को बहुत कम करिबा, एक्स रो इंक्रीज वैल्यू को आस्ते आस्ते कमेइबा, ताले हम कोन पाइबा, दैट लाइन बिकम्स ए टांजेंट एट ए, आ सेटा ए रो टांजेंट हे जिवो, आ इस ताले ऑलरेडी तो स्लोप अछि,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अच्छी सेटा कौन हो स्लोप ऑफ टांजेंट हो ए पॉइंट रे बुझिपार तेणु ए पॉइंट रे आम कौन पाइबा जदि बीटा ए को क्लोज हम डेल्टा एक्स जिते टेंड्स टू 0 हम आम कहिबा लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिस इज कॉल्ड एज डी वाई बाई डी एक्स हियर कौटी आम डेल्टा एक्स कमे कि 0 करवा माने कौन टेंड्स टू 0 माने अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स कमे कि 0 माने आम ए पॉइंट रे पहुँचवा पूरा लाइन रो स्लोप न काढ़ी आम से लाइनटा ए पॉइंट रे टांजेंट हो ए पॉइंट रे कौन हो टांजेंट हो तेणु से टांजेंट रो स्लोप जो डी वाई बाई डी एक्स होची गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे टांजेंट रो स्लोप बुझल बाय सिंपली कहते डी वाई बाई डी एक्स माने स्लोप एट ए पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से डी वाई बाई डी एक्स अदर नेम हो फाइंड स्लोप आम गोटे y फंक्शन ऑफ x ग्राफ रो जेकोसी पॉइंट स्लोप बाहर करने आमको डी वाई बाई डी एक्स दरकार तामाने जेकोसी y इज इक्वल टू x रिलेशन रे y इज इक्वल टू x रिलेशन जिते y फंक्शन ऑफ x अच्छी तो आम मानकर ये गोटे y फंक्शन ऑफ x अच्छी हाँ बुझल ये पॉइंट रे आम डी वाई बाई डी एक्स बाहर करवा माने आम देखा ये पॉइंट टांजेंट ड्र करवा ये एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखा ये एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखा सपोज एटा x1 y1 एटा होची x2 y2 बुझीपार ना दिस इज थीटा तो ये पॉइंट tan थीटा तो ये tan थीटा ए पॉइंट p tan थीटा होची y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 and that will give you slope dy by dx at p ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ differentiation what is dy by dx ताले जे y is equal to function of x कर्व रो गोटे पॉइंट रे टांजेंट ड्र करके तार स्लोप बाहर करबाटा अछि से पॉइंट रो dy by dx पिला माने 11th क्लास पिला माने एगुडा एते बुझ न बुझ केमती ऑपरेशन करा अछि सिख दिस इज व्हाई हमें कोन कहबा dy by dx अर्थ होछि dy by dx को एमती कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y डिफरेंशिएशन एमती डेफिनेशन कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is equal to slope of tangent drawn at any point on the graph y is equal to function of x सेमती dy by dt सेमती y is function of t चला or you can say differential operator in particularly in kinematics हम तो जानले डिफरेंशिएशन माने स्लोप बाहर करबा मैथमेटिकली किंतु मैथमेटिकल से मीनिंग स्लोप किंतु फिजिक्स रे कोन दरकार फिजिक्स रे हमें टू गेट द इंस्टेंट वैल्यू तो इंस्टेंट पैरामीटर हमें पाइबा इंस्टेंट पैरामीटर फ्रॉम एवरेज पैरामीटर माने एवरेज वेलोसिटी रू इंस्टेंट वेलोसिटी को पाइबा पाई एवरेज पैरामीटर फ्रॉम एवरेज माने एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंट वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन टू इंस्टेंट वेलोसिटी टू गेट द इंस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू विल गो फॉर डिफरेंशिएशंस द डिफरेंशियल ऑपरेटर बेसिकली यूज टू गेट इंस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू okay similarly like differential operator this is chain rule is also there maximum minimum is there later on I will discuss now it is not required for kinematics particularly later on it is required chain rule maximum minimum आ गोटे केतबेले अलगा वीडियो रे कहि देबी इंटीग्रेशन जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एबे जो प्रथम मसोनी स्ट्रेट लाइन बुझिया जहाँ दरकार से कही दूँ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जस्ट माने यू गेट द इंटीग्रेशन अदर नाम हो समेशन इंटीग्रेशन रो अदर नाम हो समेशन बुझल ना टू गेट द टोटल बाय यू कैन से टू गेट टोटल माने और यू कैन से टू गेट एवरेज वैल्यू फ्रॉम इंस्टेंट वैल्यू एवरेज वैल्यू फ्रॉम इंस्टेंट जस्ट उल्टा तो एवरेज वैल्यू फ्रॉम इंस्टेंट वैल्यू माने एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इंस्टेंट वेलोसिटी सेटा कौन उल्टा था इंस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेशन कौन एवरेज वैल्यू फ्रॉम इंस्टेंट वैल्यू
तार एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज मोमेंटम फ्रॉम इंस्टेंट मोमेंटम, इंटीग्रेशंस. ओके, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल टू गेट द टोटल वॉल्यूम, टोटल प्रेशर, टोटल फोर्स, टोटल एरिया आमको इंटीग्रेशन करने पड़ो. ओके, इंटीग्रेशन माने पूरा पाइबा. इंटीग्रेशन रो दी प्रकार अच्छे. इंटीग्रेशन सिंबल शुण पे यहाँ हूँ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन एटा सिंबल वाई डी एक्स. टेक्निकल टी प्रॉब्लम अच्छी बोली बसिक पढ़ाऊँ. व्हाइट बोर्ड रे सेट कर वॉइस आसुनी है पे एडजस्ट कर. सिंबल एटा हूँ तुम फंक्शन, एटा हूँ इंटीग्रल वेरिएबल. इंटीग्रल वेरिएबल सिंबल फंक्शन इंटीग्रल वेरिएबल इंटीग्रेशंस. जदि तार एठी एस भाया जो फिगर अच्छी ये भैल्यू देते डेफिनाइट माने तार लिमिट देथिबो. लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, लोअर लिमिट अपर लिमिट देथिबो ताल सेटा होछि तमरो डेफिनाइट. अदरवाइज इनडेफिनाइट. कौन इनडेफिनाइट कौन डेफिनाइट हम देखिबा. गोटे एग्जांपल दूसरी. आम इंटीग्रेशन दुई प्रकार मुझे कहली. गोटे हूँ कौन इनडेफिनाइट आउ डेफिनाइट. इंटीग्रेशन हूँ टू काइंड्स. गोटे हूँ कौन इनडेफिनाइट आउ हूँ तुम डेफिनाइट. गोटे हूँ इनडेफिनाइट और डेफिनाइट. इनडेफिनाइट मानकर मुझे कहली एक्स टू द पावर एन डी एक्स. से किसी लिमिट रही फर्मूला तार आसो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बै एन प्लस वन प्लस गोटे कन्स्टाट रही. तार तार भैल्यूटा किसी आमको यही कन्स्टाट भैल्यू आमको जना ना. फाइनाल भैल्यू इज नॉट ऑब्टेन बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. एन इज नॉट इक्वल टू -1 कहना एन -1 आउट फॉर्मूला. डेफिनेट इंटीग्रेशन हम डिस्कस करवा. इंडेफिनेट तो दरकार ना बेसी. तो डेफिनेट अर्थ हूँ से इंटीग्रेशन रो लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट मानकर मुझे कहली वाई डी एक्स ए टू बी से वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन. ताल कौन आसो एक्स टू द पावर एन डी एक्स ए टू बी. तार जनरल फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बै एन प्लस वन होल टू द पावर ए टू बी. तो केमती लिखाଯିव ताको लिखाଯିव केमती एक्स जगह बी पकाब बी टू द पावर एन प्लस वन बै एन प्लस वन माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन बै एन प्लस वन एमती लिमिट पकई करा जाए. एग्जांपल गोटे करदे बुझिपार. एग्जांपल करदे गोटे दुटा करदे. बहुत पाठ अच्छे केमी तुम अल्प समय भितर जानिकी केमती मशीन स्टेट लाइन पढ़ो से इंपोर्टाट है. बर्तमान पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा इंपोर्टाट जी ना केमी चैप्टरटा बुझे से इंपोर्टाट. इंटीग्रेशन में मनकर मुझे कहली एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 to 4. ताल आम कौन करवा आम तो फर्मूला जाने एक्स टू द पावर 2 + 1 बै 2 + 1 n + 1 2 to 4 लिखते. ये वेरिएबल किए अच्छी एक्स अच्छी तो 4 to the power 3 माइनस 4 to the power 3 बै 3. एक्स जगह 4 पकईली माइनस. ये प्रोसेसटा आगे पड़ो अपर लिमिट एटा अपर लिमिट आ लोअर लिमिट. अपर लिमिट पड़ो एक्स जगह माइनस लोअर लिमिट पड़ो 2 to the power 3 बै 3. तो यू विल गेट 4q माइनस 2q बै 3 है 64 माइनस 8 बै 3. देखो फाइनल वैल्यू आसला ना नहीं से डेफिनेट इंटीग्रेशन कह जाए. डेफिनेट इंटीग्रेशन माने समेशन टू गेट द टोटल वैल्यू. डेफिनेट अर्थ हूँ फाइनल वैल्यू शुड बी ऑब्टेन. फाइनल वैल्यू आसो. फाइनल वैल्यू आम पाइबा किसी कांस्टेंट पाइबानी किसी वेरिएबल पाइबानी. आ गोटे कर दूँ देख मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेले 2-3 घंटा लगे किंतु आम अध घंटा भितर पढ़ेदेला कौन अच्छे टी तुम जानी तो बेसिक्सटा. आउ जो डाउट मत पचार सेमती एक्स स्क्वायर मानकर कहली एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स डी एक्स सपोज एक्स डी एक्स 4 to 6 हो पार. एक्स डी एक्स मैंने एक्स पावर 1 अच्छी एक्स टू द पावर 1 + 1 बै 1 + 1 ये क्वेश्चन मुझे करी पुणी काइनामिक्स व्यस्त दरकार नहीं. तो तेणु एक्स स्क्वायर बै 2 4 to 6 तो एक्स जगह पड़ो 6 स्क्वायर बै 2 माइनस 4 स्क्वायर बै 2. सो इधर 36 माइनस 16 बै 2 10 आसला एमती आउ. दिस इज ओके. ये पुणी थे जब दरकार पड़ो कह आउ थे पुणी वीडियो करदेवी.